schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate
certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases
for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment.
To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जो कि बजट 2026 को लेकर बड़ी बातें क्या रही है, हर कोई यही जानना चाहेगा। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको क्रमबद्ध बताएगा। 31 माह तक कम फीस के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल। स्तर के लिहाज से हम बात करें तो ये वक्त बढ़ा दिया गया अचल विदेशी संपत्ति ना स्तर के लिहाज से हम बात करें तो जयपुर में के अलावा चाहे हम कपड़े की बात करें या फिर सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की बात करें, हम बात करें चमड़े की, तो वो सस्ते फिलहाल हो गए, उन्हें निर्यात करना सस्ता होगा। शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर घटाई गई है, 5% से 2% कर दी गई। बॉन्डेड जोन में कैपिटल गुड्स देने वाले गैर निवासी को 5 साल तक आयकर से छूट। ये बड़ी घोषणाएं जो इस बजट में, आम बजट में, मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। देखिए, हम जिक्र कर रहे थे जब एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे कि ये कहीं चुनावी बजट बनकर ना रह जाए, लेकिन ये पहले से ही तैयार था कि किस तरह से जो आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी बहुत कुछ खास होगा। वित्त मंत्री क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनाते हैं। हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो बड़ी बातें रही, बड़ी घोषणाएं रही, बेहद महत्वपूर्ण रहा, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए फ्लैट कॉरिडोर का ऐलान, इंफ्रा पर बड़ा खर्च करने की घोषणा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12,02,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा।
रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में दुर्लभ खनिजों का कॉरिडोर बनेगा। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में बायो फार्मा शक्ति योजना, इसके अलावा 10,000 करोड़ के निवेश से बायो फार्मा शक्ति योजना होगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान खुलेंगे और भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। देखो, बजट के बड़े फैक्टर्स हैं, रोजगार के बड़े अवसर हैं, यह मानकर चल रहे हैं, लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार हर एक अपडेट देंगे कि बजट में बड़ी घोषणाएं क्या रही। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान, वही इंफ्रा पर बड़ा खर्च करने की घोषणा। यह जरूरी था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे मजबूत होंगे, तो उस पर बड़ा खर्च करने की घोषणा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ का ऐलान है और आपको ये देखिए बता रहे हैं कि कितना है, पिछले साल के मुकाबले 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में दुर्लभ खनिजों का कॉरिडोर अब बनेगा और इसके अलावा इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में बायोफार्मा शक्ति योजना, 10,000 करोड़ के निवेश से बायोफार्मा शक्ति योजना, जिसके तहत 3 नए संस्थान खुलेंगे। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ये बेहद खास इसलिए निर्यात करना, यानी जो कपड़ों का निर्यात करना होगा वो सस्ता हो जाएगा। दवाइयों के क्षेत्र में बायोफार्मा शक्ति योजना और 10,000 करोड़ के निवेश से बायोफार्मा शक्ति योजना ये धरातल पर आएगी। कितना फंड होगा वो आपको बता रहे हैं, जिसके तहत 3 नए संस्थान खुल पाएंगे। यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं अगर आगे घोषणाओं का जिक्र हम करें तो वो है भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM 2.0 लॉन्च करेगा। मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कल पुर्जे के लिए भी ये बजट और बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एक एक डिजिट बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपया इनकम टैक्स फॉर्मा को आसान किया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले बजट की बात करें तो राहत दी गई थी, इस बार सरलीकरण कर दिया गया। इनकम टैक्स पे करना बहुत आसान हो जाएगा। भारत में डेटा सेंटर बनाने पर भी कंपनियों को छूट होगी, वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। लंबे समय से मांग थी और अब इंफ्रा पर बड़ा खर्च करने की घोषणा भी यहां पर की गई है। कपड़े की बात करें, क्योंकि टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, तो वो निर्यात करना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, घरेलू उत्पाद और उसको बनाने पर, उन प्रोजेक्ट्स पर, उनकी फंडिंग पर जोर रहेगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा हो गई है। तो एक एक करके बजट की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ खास रहा वो जिक्र कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में दुर्लभ खनिजों का कॉरिडोर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी बता दें कि भारत में डेटा सेंटर बनाने पर कंपनियों को छूट रहेगी। खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का ऐलान रहेगा और ऐसे में युवाओं को खास मौका मिलेगा। तो लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब बजट आता है तो हमेशा ज़हन में यही होता है कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। इन घोषणाओं के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा, जब इंप्लीमेंट होगा वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा, आम जनता की जेब पर कितना भारी, या फिर फायदा या नुकसान। लेकिन इन सब के बीच में हर किसी की नजर जो थी वो थी शेयर बाजार पर। तो आपको बता दें कि शेयर बाजार में भारी गिरावट इस वक्त की बड़ी खबर है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट। जब बजट पेश भी नहीं किया था, 11 बजे जब बजट पेश करना शुरू किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, तब भी इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली थी, यही इसी तरीके का आंकड़ा। और अब एक बार फिर से जब बजट पेश हो चुका है तो शेयर बाजार में एक बार फिर से खलबली, भारी गिरावट। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब रविवार को बजट पेश किया गया है और रविवार का दिन है, फिर भी शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट आई। अब देखने वाली बात होगी कि इससे कितना इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस लिहाज से बजट को कैसे आम नागरिक या फिर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला वो शख्स है, वो उसे किस तरह से देखेगा, व्यापारी वर्ग में किस तरह से इन घोषणाओं का असर होता हुआ नजर आएगा। सेक्टर वाइज अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शेयर बाजार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और जब
बजट की घोषणाएं होती है या बजट से पहले जो अनुमान लगा लिया जाता है उसके तहत भी बाजार बहुत कुछ बयां कर देता है। और अब 2300 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, अब इसका क्या अंदाजा लगाया जाए, ये बहुत जल्द जो एक्सपर्ट्स है अपनी राय रखते नजर आएंगे। फिलहाल बजट पेश हो चुका है और शेयर बाजार धड़ाम होकर नीचे गिरा है। अब बजट के बाद शेयर बाजार में तो गिरावट आ गई है, लेकिन अब इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, शेयर्स कितने जो हैं उथल पुथल यहां पर मचाते नजर आएंगे, ये बहुत जल्द तस्वीर साफ होगी। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब जिस पर हर किसी की नजर थी उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हां सरलीकरण ये कि बहुत आसान यहां पर कर दिया जाएगा जब आप टैक्स पे करेंगे। और चमड़े और कपड़ा निर्यात को करना वो आसान यहां पर कर दिया गया है। बहुत कुछ ऐसा है। और ये शेयर बाजार की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स में गिरावट, 2300 अंकों की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। देखिए लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि क्या सस्ता हुआ है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है चमड़ा और कपड़ा, जो कि निर्यात करना सस्ता, लेकिन महंगा क्या हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। विदेश यात्रा करना महंगा हो गया है, जूते अब महंगे हो गए हैं, लेकिन चमड़ा सस्ता हुआ है। देखिए हम आपको एक बार फिर से करेक्ट करके बताते हैं क्या सस्ता क्या महंगा। सीएनजी सस्ती हो गई है, जूते यहां पर सस्ते हो गए हैं, विदेश यात्रा करना सस्ता, बायोगैस सस्ता, कपड़ा सस्ता, चमड़ा सस्ता, ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए कपड़े को निर्यात करना, चमड़े को निर्यात करना, विदेश यात्रा पे आप जाते हैं तो वो सस्ती हो जाएगी। और कैंसर की दवाई, क्योंकि आपको पिछला बजट भी याद होगा जब जीवन रक्षक दवाइयों पर टैक्स फ्री कर दिया गया था, और डायबिटीज की दवाई ये सस्ती, एयरक्राफ्ट का सामान वो सस्ता, कैंसर की दवाइयां वो सस्ती, बैटरीज ये जो उपकरण है इसमें इस्तेमाल वाले वो भी सस्ते हो गए हैं। माइक्रोवेव ओवन अगर अभी किसी ने नहीं खरीदा, खरीदने की सोच रहा है तो उसके लिए फायदे का सौदा। सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसको बढ़ावा देने की कोशिश केंद्र सरकार की हमेशा रही है, बीड़ी भी सस्ती हुई है, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं।